Hey guys, welcome to my channel. So today I'm going to tell you how I created this cut crease look by doing just 3 simple steps and using spoon. So let's get started. So I already have applied my concealer and my foundation. So first what I'm gonna do is I'm taking this spoon and placing it on my lid. Now I'm taking a little bit of my light brown shade and blending it onto my crease. As you can see, अब मैंने स्पून की हेल्प से ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है और अब इसी लाइन को मैं थोड़ा सा इंटेंस करूँगी. I'm taking a little bit of my brown eyeshadow, dark brown eyeshadow, and blending it onto my crease and building the color slightly. Now I'm taking deep brown shade on my flat blending brush और मैं इस शेड को अच्छे से अपने क्रीज में अप्लाई कर लूँगी, स्पेशली इनर कॉर्नर की तरफ. और अच्छे से इस लाइन को मैं डार्क करी क्योंकि इसके बाद मैं कट क्रीज करूँगी, इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी, इसलिए मैं इंटेंसिफाई कर रही हूँ इस लाइन को. चलें अब हम करते हैं अपना सेकंड स्टेप एंड आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ माय कंसीलर ऑन फ्लैट कंसीलर ब्रश एंड अप्लाइंग इट ऑनटू माय लिड. सो मैं इसको बिल्कुल अच्छे से आराम से अप्लाई कर रही हूँ और मैं इसे कट क्रीज बना लूँगी बिल्कुल राउंड में, और मुझे इसे बिल्कुल भी मैसी नहीं करना. एज यू कैन सी कि मैंने एक कंसीलर की हेल्प से ये एक कट क्रीज बना लिया है. सो नाउ आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ माय सेटिंग पाउडर एंड अब मैं इसको अच्छे तरीके से कंसीलर को अपने सेट कर लूँगी क्योंकि फिर इसके ऊपर भी हम आई शेडो अप्लाई करेंगे इसको हाईलाइट करने के लिए. सो आई एम सेटिंग अप माय कंसीलर. नाउ द थर्ड स्टेप इज आई एम गोइंग टू अप्लाई हाईलाइटर ऑन माय लिड. As you can see, the cut crease look is almost completed, but I always apply winged eyeliner with this look. Now I'm taking Inglot Pure Pigment and going to define my cut crease. Guys, if you want, you can skip this step, but I'm doing because I like to define my crease. So now I am shaping up my eyebrows. After I'm done with my eyebrows, I'm applying a little bit of highlighter on my brow bone. This look is completed. I have applied my false eyelashes off camera. Hope you like the video. Please do subscribe to my channel and click the bell icon for the latest videos.